हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिक ट्रैकर स्पेशल लाइव शो इन द ईयर। मैं हूं चिराग मनोजा आपके साथ। T20 वर्ल्ड कप में माना एक बड़ी हार मिली। सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड ने 10 विकेट से हरा, उसका बहुत दुख है। पर जो बीत गया सो बीत गया। बात करते हैं आज की। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा वेलिंगटन में। अब दोनों ही टीमें सेमीफाइनल हार कर आ रही है। दोनों के पास एक पॉइंट है प्रूव करने के लिए कि हम बेस्ट है। तो बुलाते हैं आदित्य और विघ्नेश, आज के गेस्ट हमारे। आदित्य, लेट्स स्टार्ट विद यू। अभी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का जो अप्रोच था वो काफी डिफेंसिव था कि स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, बहुत क्रिटिसाइज किया फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, फैंस। तो अभी फ्रेश इंडिया है, फ्रेश प्लेयर्स हैं, फ्रेश मोटिवेशन है, यंग प्लेयर्स हैं। तो आपको लगता है वो ट्रांजिशन फेज शुरू हो चुका है फेयरलेस क्रिकेट का? ट्रांजिशन फेज तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी सीनियर प्लेयर्स तो रेस्टेड है, तो पता नहीं वो खेलना चाहते या नहीं। रिपोर्ट्स है कि अभी सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप पे कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन राइट। ये टीम जो है वो बहुत एक्साइटेड, बहुत यंग है और एक्साइटेड दिख रही है। तो आई थिंक ये अच्छा चांस है कि इंडिया को अपना अप्रोच इधर से चेंज करना स्टार्ट कर दे, ताकि नेक्स्ट टू ईयर्स में टीम रीबिल्ड भी हो जाए। एंड देखा जाए तो कैप्टनसी भी हार्दिक पांड्या के पास है, तो मे बी फ्यूचर कैप्टन, यू नेवर नो। तो या अच्छा एक्साइटिंग टाइम है इंडियन क्रिकेट के लिए, एंड आई थिंक द यंगस्टर शुड कैश इन नाउ। राइट। आदित्य, आपने हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के बारे में बात की। अभी वीवीएस लक्ष्मण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ की थी कि बहुत ही अच्छे कैप्टन है, काम है, कंपोज्ड है, टीम को संभालते हैं, चाहे ड्रेसिंग रूम में हो, ग्राउंड में हो। तो कहीं ना कहीं से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि आने वाले टाइम में हार्दिक पांड्या हमें परमानेंट T20 के कैप्टन देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, ये तो अभी कह नहीं सकते फर्मली, बट अच्छा चांस है। उन्होंने काम एंड कंपोजर उनका एटीट्यूड दिखाया है। आईपीएल में उन्होंने गुजरात टाइटंस को उनके डेब्यू सीजन में ही जितवाया था, और जब से कमबैक किया इंजरी से, तब सबसे एक अलग हार्दिक पांड्या दिखाई दे रहे हैं। केएल राहुल हालांकि वाइस कैप्टन थे T20 वर्ल्ड कप में, बट मुझे वो उनका भी एक चांस बनता है। बट अगर अगर हम फ्यूचर का सोच रहे हैं तो मुझे लगता है हार्दिक राइट। पांड्या ही सही चॉइस रहेंगे। Right. Vignesh, I'll come to you. Abhi, Shubman Gill, if he plays today, it's going to be a very special match for him because T20Is में we're going to witness him for the very first time. He made his ODI debut in 2019 in New Zealand only. He played under 19 World Cup in New Zealand. So it's going to be a very special match for him. Vignesh, you're not audible. Your mic. Remove the earphones. Speak directly. Is it better now? Yeah, yeah. Yeah. You are. Yeah. So Shubman Gill won when he burst onto the scene in the Under 19 World Cup in New Zealand. So him and Prithvi Shaw were two exciting prospects who could just take away Indian cricket, were the next two big things in Indian cricket. So Shubman Gill with his IPL performances has shown glimpses of it in T20I cricket, but with again the mentality, there is skill set, but again T20 cricket is more about mentality and how he takes things forward. If he's able to put up with the aggressive mindset in the power play, I think he could do wonders in T20s. But yeah, it's again in the Indian cricket as well as the IPL franchises have backed Ishan Kishan to do the same. So once the overhaul starts to begin for the 2024 World Cup in Indian cricket, we will see how the performances from Shubman Gill comes in, as well as the IPL performances in with 2 seasons to go for the 2024 World Cup. I think but again, it's all an exciting phase, a new partnership to see with. So it's an exciting phase for Indian cricket as well as the fans. Right. So Vignesh, before moving to head-to-head record, let's talk about the opening pair. Who is going to open today, according to you? Like, I feel it is going to be Shubman. Yeah, Rishabh it is Pant or going to Ishant? be. It is going to be Shubman Gill and Ishan Kishan, to be fair. And I think Sanju Samson might get a chance ahead of Shreyas Iyer at number 3, and we take it from there. Yes. So the Right. top 3 is Shubman Gill, Ishan Kishan, and Sanju Samson. Yeah. Samson, right. So अभी बढ़ते हैं head-to-head record की तरफ और देखते हैं वहां पर हमारे लिए क्या है. So both the teams have faced each other in 20 T20 matches so far. India 11 बार जीता है, 9 बार जीता है न्यूजीलैंड. तो इवन स्टीवन है यहाँ पर, कोई ऐसा डोमिनेट नहीं कर रहा. और आई Yeah. थिंक T20
आई थिंक T20s में ये रिकॉर्ड मैटर नहीं करता, क्योंकि चाहे जितना मर्जी आपका हेड टू हेड रिकॉर्ड बेटर हो, जो जिस दिन वहां पर अच्छा खेलेगा वही बाजी मारेगा। आदित्य, अभी विघ्नेश ने बात करी संजू सैमसन की। अभी एशिया कप से पहले उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया जब सीनियर प्लेयर्स ने कम बैक करा। काफी फैंस बहुत ही लाइक नाराज थे कि संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए था। आई मीन बेहतरीन स्ट्राइक रेट था इस साल, अच्छा रिकॉर्ड है, एवरेज अच्छा है, सब कुछ अच्छा था। तो अभी डेफिनेटली इन्हें मैच टाइम मिलने वाला है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी ऋषभ पंत तो डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है क्योंकि वाइस कैप्टन है। तो आपको लगता है कि संजू सैमसन के पास मौका है एक खुद को प्रूव करने का और फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बनने का? फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर तो मैं नहीं मानूंगा, बिकॉज इंडियन लेकिन टीम हैज बीन बैकिंग ऋषभ पंत T20s में राइट फ्रॉम वर्ल्ड कप। यस यस, लेकिन ऋषभ पंत मेरे हिसाब से फर्स्ट चॉइस रहेंगे, बट संजू सैमसन हैज द एबिलिटी टू प्ले एज अ प्योर बैटर. He has shown that before, but there has been less consistency. You can say he was unfortunate not to get enough chances. But when you are staying in a country like India where there is loads of talent, you have to grab your chances, I feel. So this is the best chance to get Sanju Samson, for Sanju Samson to become a permanent member of a T20 side at least. एंड यस, नंबर 3 खेलने का चांस है, जैसे विघ्नेश ने कहा। अगर नंबर 3 का चांस मिलता है तो मोर और लेस कभी ना कभी पावर प्ले में खेलने का भी चांस मिलेगा। तो उनको एक ये चांस अपॉर्चुनिटी है कि बड़ा इनिंग्स खेले। वो 20-30 विल नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन। सो अगर उनको लॉन्ग रन में खेलना है तो 2024 का T20 वर्ल्ड कप अगर टारगेट कर रहे हैं तो बड़ा इनिंग्स खेलने की जरूरत है। जबकि सीनियर प्लेयर्स वापस भी आए, इफ एट ऑल दे विल कम, तो उनको उधर ही वो स्लॉट उनको ये करना पड़ेगा, हैमर डाउन राइट करना पड़ेगा। राइट। अभी सीनियर प्लेयर्स के जाने के बाद तो एक और यंगस्टर है जिन्हें मौका मिला इस सीरीज में, उमरान मलिक। सो विघ्नेश, उमरान मलिक is definitely going to be a player to watch out for, because we are really excited. He did not get a chance in the T20 World Cup because of lack of experience. So what do you think? Is he going to prove himself that yeah, he has pace, line and length, everything? Because in IPL 2022 he performed really well. Yeah, pace, raw pace is always an exciting thing to watch out Right. for. Pace can actually open a lot of doors for you, so you can get you a lot of success in the starting stages of your career. But again, fast bowling is not just about pace; it is about how you stick to your lens, how you read the batsman, then how you plan to take his wicket, etc., etc. As well. But Umran's he's also showed what his potential basically in the IPL. But again, with the raw, fresh talent, I think they didn't back him for the 20 World Cup in Australia. But I think raw pace would have helped India go in the tournament. But again, what's done is done, and there's no cribbing about the past. But again, he's a raw talent, he's a fresh talent. I think Right. if India back him, he might see on his day he can pick a 5 for 35 or whatever it is. But again, instead of going for 6 in an over, even if he goes for at least 8 or 9, but if he's a wicket taking option. So I would any day prefer a 4 for 30 instead of a 2 for 18 or something like that. So I think India, even though he leaks runs on his bad days, I think they should back him. And I think he's a fantastic prospect for India, and he's the only bowler right now on the scene who can click consistently over 155. Lockie Ferguson does it, but again, Umran's a sensational talent. I think he's a brilliant prospect, and Indian fans could, he could set stage for the next 5 years or a decade for Indian cricket. राइट। विघ्नेश, पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर महंगे भी साबित होते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो विकेट टेकर है, विकेट लेना उनका काम है। तो हाँ, अगर वो 9 रन देते हैं पर अब तो मतलब ऐसा कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। फैंस क्या होता है एकदम से स्टार्ट कर देते हैं, यार खराब है सब, नहीं ऐसा नहीं, इतना महंगा साबित हो रहे हैं। पर यार ये वो पॉइंट कि विकेट टेकर हैं तो उन्हें उसी की नजर से देखना चाहिए। Well, अब बढ़ते if you actually see, India lacked wicket-taking options in the last 2 World Cups, and which राइट cost them. I know Chahal was expensive going into the tournament. He was slightly below on confidence, but again, he's a wicket-taking option. And with I am not criticizing Akshar and Ashwin, but again, if there is a wicket-taking option with big grounds in Australia, it could have played a valiant role or could have be a राइट। game changer for India. But Vignesh, yeah. before moving to pitch report, let's talk about Chahal, because he did not get a single game in the T20 World Cup, और everyone criticized कि क्यों नहीं खिलाया, सभी लेग स्पिनर्स को मौका मिला and they performed really well in the tournament. तो अभी he has a big point to prove कि I'm the first choice spinner, मैं करके दिखाऊंगा। Yeah, What's your take on it?
in the 2021 World Cup, he was not in even in contention in the squad with Right. two other spinners performing well in the IPL. But again, he proved his point in the IPL by beating the leading wicket taker and also picking up 27 wickets. He was back in the squad for the 2022 World Cup. But I feel like to like replacements are slightly overrated. Right. Matchups, as we were talking the other day, matchups as well are slightly overrated. But again, yes, matchups can come good, but Hmm. a wicket taking option is a wicket taking option in the end. And if Right. he could even go for a few boundaries or sixes in an over, he could come and get you that wicket, and the pressure is back on the batting team. So you have to get. So it's all about perspectives, and the management went with the economical perspective to put pressure. But again, I feel wickets more than economy is the way to go moving forward, especially in T20s. राइट। तो अब देखते हैं पिच रिपोर्ट कैसी है, कैसा रहेगा स्काई स्पोर्ट्स का हमारे लिए ग्राउंड, क्या है वहां पर, पेसर्स को हेल्प मिलेगी, स्पिनर्स को मिलेगी। तो पेसर्स ने यहाँ पर ज्यादा विकेट लिए हैं एज कम्पेयर टू स्पिनर्स, तो पेसर्स को डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है 6 मैचेस जीते हैं, चेजिंग टीम ने जीते हैं 8 मैचेस, टोटल 15 T20 मैचेस खेले गए हैं और एक मैच टाई रहे। तो आदित्य, ये जो पिच है डेफिनेटली पेसर्स को हेल्प मिलने वाली है। आपको क्या लगता है, मतलब इंडिया और न्यूजीलैंड की तरफ से कौन से ऐसे पेसर्स हैं जो इस पिच पर खतरनाक साबित हो सकते हैं? देखो, अर्शदीप सिंह ने दिखाया था कि वो स्विंग कर सकते हैं नए बॉल से। तो वो लेफ्ट आर्म एंगल जो है बहुत टाइम के बाद इंडियन इंडियन टीम के पास आया है, जहीर खान के बाद मेरे हिसाब से जो अच्छा बॉलर मिला है। तो अगर राइट। नए बॉल से हेल्प है, जैसे हमने ये इसमें देखा कि पिच से मदद मिलती है नए बॉल से। ऊपर से अगर मैच आज बारिश अगर रुकती है तो मैच होता है, तो ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से बहुत स्विंग मिलने वाला है। तो अर्शदीप सिंह इंडिया की तरफ से बहुत की बॉलर रहेंगे मेरे हिसाब से, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी प्रूव किया था। और व्हेन इट कम्स टू न्यूजीलैंड, आई थिंक ही विल बी टीम सऊदी इफ ही प्लेज, इफ ही इज नॉट रेस्टेड फॉर दिस मैच। राइट। टीम सऊदी अगेन विल बी अ की बॉलर फॉर देम व्हेन इट कम्स टू दिस। राइट। अब देखते हैं माइलस्टोन्स, कौन कौन से प्लेयर्स कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव कर सकते हैं इस मैच में। ऋषभ पंत requires 30 runs to complete the landmark of 1000 runs in the T20Is. So Vignesh, what's your take on this? Is it doable? आज Yeah, होगा? I think again depends on where he basically bats. Or Rishabh Pant gets a lot of criticism. He's slotted somewhere around 6, and he gets to face to 10 to or 12 balls, and suddenly he just doesn't click, and there's a lot of criticism. Again, it's about the impact he creates. I know he's failed here and there, but again in T20s he's not been right at the top. But again, it's also about his batting position. If he could slot in somewhere, if India are in a good position, and if Rishabh Pant needs game time in T20s, they could play with Suryakumar Yadav. I know he's in sensational form, but with game time as well in a bilateral series, he could come up at number 4, and if he could play his role, he could pace his innings, and he could go all guns blazing in the death overs. He could reach the 30-run landmark. Right. Let's move on to another milestone. Rishabh Pant, ये भी ऋषभ पंत है, 67 runs to complete 4000 runs in international cricket. So आदित्य, आपको क्या लगता है? 67, 30 तो विघ्नेश ने बोला कि बन सकते हैं, 67 हो जाएगा? 67, unless he opens, there is no chance in this game. हाँ, सीरीज बट में हो हाँ, सकता अगर उसको कंसिस्टेंट टॉप फोर में अगर उसको चांस मिलता है तो इस सीरीज में जरूर बन सकते हैं। बट है। फिर उसके लिए बारिश को भी रुकना जरूरी है, और फुल T20 गेम होना भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ऋषभ राइट। पंत, आई फील फॉर हिम व्हेन इट कम्स टू T20, ही हैज नॉट प्लेड टू हिज पोटेंशियल, बट अगेन ओपन करने का चांस मिलना चाहिए, जैसे पहले ट्राई किया हुआ है, क्योंकि ही कैन गो बजर्क इफ ही ओपन्स इन द पावर प्ले, he can go राइट। बजर्क। सो लेकिन इस सीरीज में तो वो नहीं दिख रहा है, बिकॉज अगेन वी आर गोइंग विद शुभमन गिल एंड ईशान किशन, I suppose. So let's see if he gets to play in the top 4 at least. I think he can reach it. राइट। तो देखते हैं अगला माइलस्टोन। जेम्स नीशम requires 1/4 to complete 50 fours in the T20Is. आई थिंक ये डुएबल है, हो जाएगा आराम से। Yeah, विघ्नेश? he's a yeah with a finishing role he's got in the New Zealand team. Even if he like comes into bat at the 17th or 18th, or I think it's very much doable. राइट। और इस सोडी भी यहाँ पर एक माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं, 2 wickets away from completing 200 wickets across formats. Yeah, so he's been New Zealand's highest wicket taker in 2022. So I think he's got about 20, close to 29, 28 wickets. So I think 2 wickets in a game, 4 overs. I think with the leg spinning mindset, I think it's very much doable as well. Yet again. तो आदित्य, ये वाला माइलस्टोन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भुवनेश्वर कुमार 4 विकेट चाहिए।
becoming the bowler with the most T20 wickets in a calendar year. सिर्फ 4 विकेट्स भुवनेश्वर कुमार को. आपको लगता है हो जाएगा आज के मैच में? यस, हो जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ. गिवन हिज फिटनेस एंड लुकिंग एट 2024 वर्ल्ड कप, अगर हम क्या भुवनेश्वर कुमार को 2024 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और यूएसए में जो हो रहा है उसमें अगर बॉलिंग करते हुए देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये मतलब क्या दिमाग से उसको उनको पिक किया गया. हाँ, टू बी वेरी to be राइट. honest, to be very fair with him, I don't looking at his fitness also. Personally, I don't see him bowling in 2024 World Cup. So okay, coming back to the milestone, it is a very it will be a world record I see. So 4 विकेट्स तो है, न्यू बॉल है, न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, तो मोर और लेस इस सीरीज में तो हो जाना चाहिए. नॉट इन दिस T20 है, बट मे बी इन दिस सीरीज बहुत अच्छा चांस है उनके पास टॉप में जाने का. यस, राइट. वैसे बहुत ही एक सही पॉइंट आपने रखा आदित्य कि 2024 में शायद हम उन्हें नहीं देख रहे खेलते हुए, पर हु नोज कि क्या पता वो खेल भी लें, क्या पता वो ना खेलें, मे बी क्योंकि किसी अभी और रोहित अच्छा. शर्मा और राइट, क्योंकि अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी कहा जा रहा है कि वो हमें शायद उस वर्ल्ड कप में खेलता हुआ दिखाई ना दे. पर अगर इस मेरे को लगता है अगर इस आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो वो कहीं ना कहीं फिर से वो कम बैक कर जाएंगे और मुझे लगता है कि शायद वो देख सकते हैं वहां पर. बाकी लेट्स सी क्या होता है. तो अभी बारिश हो रही है वहां पर. अपडेट ये है कि उम्मीद है जल्दी बारिश खत्म होगी, एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा. पर अभी हम देखते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कौन है आज के मैच में इंडिया और न्यूजीलैंड की तरफ से. तो न्यूजीलैंड की तरफ से है डेवॉन कॉनवे. 33 मैचेस, एवरेज है कमाल का ऑलमोस्ट 50 का, स्ट्राइक रेट 131.63. अब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएं, आने वाले बैटर्स का काम आसान करें. वर्सेटाइल बैटर है, एंकर इनिंग्स खेल सकते हैं, जब पावर हिटिंग की बात आती है तब भी इनका कोई जवाब नहीं है. तो विघ्नेश, व्हाट डू यू थिंक, लाइक हाउ बिग अ रोल ही इज गोइंग टू प्ले इन टुडेस मैच फॉर न्यूजीलैंड? Even in today's match and also going forward New Zealand cricket with Guptill not even getting chance to play any games recently, I think with and also Guptill scoring over 3,500 runs in his T20 career, I think it's a massive boots to fill in, and there is responsibility of course with the power play, but and the partnership with Finn Allen, he's the so one guy can set in and one guy can go all guns blazing, so the partnership is good. But if Devon Conway and Finn Allen gels together, I think it's a very exciting prospect as well as a good partnership going forward for New Zealand. राइट. अब देखते हैं टीम इंडिया की तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन है इस मैच में. I feel again it's Umran Malik, with the pace, with the thrilling attitude he brings in, who can clock 150 in a consistent manner. He is going to probably bowl 18 out of the 24 deliveries if he gets to bowl 4 overs over 150 clicks. So I think it's an exciting prospect, and he's definitely the man to look forward to. राइट. विघ्नेश, उमरान मलिक पर तो सभी की नजरें टिकी होंगी, पर इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं, सूर्य कुमार यादव. मतलब सूर्य की तरह चमकना किसे कहते हैं, कोई इनसे सीखे. लाइक T20 वर्ल्ड कप में लाजवाब परफॉर्मेंस, और जब से इंडियन जर्सी में आया ही हैज बीन अनस्टॉपेबल. T20 इसके नंबर 1 बैटर है. तो आदित्य, आज आपको क्या लगता है बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है इनके बैट से? जी जरूर. मुझे लगता है सूर्या ने इंडिया के बैटिंग डायनेमिक्स जो है चेंज कर दिए कंप्लीटली. जो थिंकिंग था, जो माइंडसेट था, वो पूरा चेंज कर दिया है. हाँ, टॉप 3 में अभी भी हमको कंजर्वेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, बट अगर हमने वर्ल्ड कप देखा होगा तो इन एवरी मैच वी वर 10 overs for 60, but in the end we finished for 170. Barring the semi-final game against England and one game against Pakistan, Surya fired in every game. So यही है. अगर हम वो फर्स्ट 10 overs का कंजर्वेटिव माइंडसेट हटाते हैं तो वी विल सी इंडियन टीम रेगुलरली स्कोरिंग मोर देन 200, और मे बी हाईएस्ट स्कोर भी T20 स्कोर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पास हो जाएगा, बिकॉज वी हैव द टैलेंट, वी हैव द प्लेयर्स, एंड विद सूर्या एट नंबर 4 he is an amazing player. I think around 20-25 इतने T20 मैचेस खेलने के बाद भी उनका स्ट्राइक रेट अगर 180 टच कर रहा है तो it is simply amazing. I don't think anyone else. Yes, रिजवान, बाबर सब टॉप 3 में है अभी भी, बट उनके जैसा डायनामिक प्लेयर T20 में आज तक नहीं हुआ है मेरे हिसाब से. बट T20 वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट 190 का स्ट्राइक रेट था. आई मीन अमेजिंग, अनबिलीवेबल. सो बटलर भी उतनी अच्छे, जैसे मैं कमेंट देख रहा हूँ, वो उनके ही स्टेडियम में खेल रहे हैं, सब बोल रहे हैं स्काई. तो यस, आज अगर मैच होता है तो he will definitely, he is a definite prospect to even win the player of the match if India go on to win the match. राइट. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द प्लेयर्स बैटल और देखते हैं वहां पर कौन कौन से इंटरेस्टिंग बैटल आज के मैच में हमें देखने को मिलेंगे.
और एक फैन का कमेंट है, इंडिया शुड अपॉइंट ऋषभ पंत एज कैप्टन। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि ऋषभ पंत को कैप्टन बनाया जाए। Uh, yeah, in T20s, I'm not too sure him not even getting a proper place in the 11, but he's a definite test captain material, I would say. But in T20s, with Hardik Pandya going, with the confidence he's bringing to the team, with the dynamic of an all-rounder who could possibly do anything in the world possible, I think Hardik Pandya is the way to go for in the T20s for Indian cricket as captain. I I feel let's not. He is a rare talent, Rishabh Pant. I feel let's not put हम्म, pressure on him हाँ with the captaincy. Let him play freely like he has हाँ been doing राइट in tests. ODIs. I feel it's only a matter of time before he goes on and goes on blazing. So I think let's not put pressure on him of captaincy. Other people are there. Other contenders are there. Very deserving contenders. And Rishabh Pant, if he gets to play with freedom, he'll break a lot of records. राइट। सो आई होप हरीश आपका जवाब मिल चुका है। तो अब बढ़ते हैं प्लेयर्स बैटल की तरफ, जहां पर हम पहले थे और इस सवाल की वजह से हम मुड़ गए वहां से। तो इस सोडी वर्सेस श्रेयस अय्यर, तो 3 बार इस सोडी श्रेयस अय्यर का विकेट ले चुके हैं। तो आज के मैच में विघ्नेश, हु डू यू थिंक इज गोना ओवरप्ले हुम? So again, depends. Newish in the side, with Shreyas Iyer is a good batter of spin against spin, but again with his attitude, it could again. It's a two-faced coin. Is the runs come, it keeps on coming, or he could take him for 2-6 and then probably top edge the ball and go. So it's a two-faced coin. But again, I would back Shreyas Iyer to go, make some runs against this Sodi. राइट। तो देखते हैं अगला प्लेयर्स बैटल कौन है और किसके बीच में हमें तगड़ा बैटल देखने को मिलेगा। तो केन विलियमसन वर्सेस यूजी चहल। 2 बार यूजी चहल गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। तो देखते हैं आज यूजी चहल के पास एक पॉइंट भी है प्रूव करने के लिए कि मुझे वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला, तो मैं अब करके दिखाऊंगा। तो केन विलियमसन को कितना जी बड़ा खतरा होने जरूर। वाला है? ये सोचता है। तो आपको लगता है जी आज जरूर। राइट? जी जरूर। युजवेंद्र चहल को क्यों नहीं खिलाया, इट्स अ सीक्रेट, नो वन नोज, बट युजवेंद्र चहल हैज अ पॉइंट टू प्रूव, नॉट ओनली अगेन इन द प्लेयर बैटल अगेंस्ट केन विलियमसन, बट ओवरऑल उनको वो सोच रहे होंगे कि अभी मैं ऐसी परफॉर्मेंस दूंगा कि आई बिकम अनड्रॉपेबल इन दिस फ्रॉम दिस साइड। केन विलियमसन के साथ यस, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, इट विल बी अ वेरी गुड बैटल टू वॉच आउट फॉर। Chahal loves taking on challenges. Like this will be a different challenge for him to cement his place in the side as well. And in terms of with Kane Williamson, I'll be a little bit on the side of Kane Williamson here because he also has a point to prove. Because there have been questions asked about his strike rate. He loves राइट। playing. He has reiterated that he wants to play all 3 formats. And so I think Kane Williamson might win this battle. Yes, Chahal can go on to pick other players' wickets, but not of Kane Williamson, according to me, in this match. राइट। अभी केन विलियमसन को सनराइजर्स हैदराबाद ने भी रिलीज करा, तो कहीं ना कहीं वो दिल टूटा होगा और टूटे दिल की ताकत वो बहुत होती है। तो हाँ, आज एक इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलेगा। तो अभी एक और बैटल है, टिम साउथी वर्सेस श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर को एक बार आउट कर चुके हैं, तो ये बैटल आई थिंक कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर जीत रहे हैं इनसे। तो विघ्नेश, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? Yeah, I feel the same with Saudi not clicking over 140 clicks, and he might try the short ball policy to Shreyas Iyer. I think Shreyas Iyer is going to get the better of Team Saudi in today's game, unless he gets to bat at 3 and Saudi gets the new ball moving around with the overcast conditions. राइट। तो आदित्य, एक व्यूअर का क्वेश्चन है हमारे लिए। विल रेन इम्पैक्ट ऑन अ प्लेयर्स करियर इफ दैट प्लेयर गॉट हिज डेब्यू चांस इन दैट सीरीज? तो वुड यू लाइक टू आंसर दैट? या देखो, अनलकी तो होगा वो प्लेयर एक्चुअली, हाँ क्योंकि चांस अच्छा मिलता है, होता है। जैसे इस सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को चांस मिलने की संभावना है, और रेन इज लाइकली टू प्लेयर्स फॉर एटलीस्ट इन टुडेज मैच। डोंट नो अबाउट द अदर वेन्यूज, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ऐसा प्लेयर्स के करियर को इफेक्ट करेगा, एटलीस्ट इन इंडिया T20I टीम नाउ गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक कि प्लेयर्स को बैक किया जाएगा जैसे पहले भी किया हुआ था, तो प्लेयर्स को बैक किया जाएगा और करियर को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज इंडिया इज डिस्पाइट देयर बीइंग ODI वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर, इंडिया इज प्लेइंग अ फेयर अमाउंट ऑफ T20Is, एंड द सीनियर्स आर लाइकली टू मिस आउट ऑन दोज ऑल द T20Is।
तो मेरे Right. हिसाब से आई गेस दे विल प्ले, they will be back and they'll get enough chances. Right. So, Vignesh, another question coming from Harish. What should be India's plan for upcoming two World Cups? Yeah, firstly, the workload management is the top priority, I would say. With the, I know playing IPL, missing out IPL is could with the pressure of IPL bowling the death overs, it could help a player in his career. But 14 games of IPL and a T20 50-over World Cup in back of their minds, I think it's all about workload management. If you don't set up your best 11 for a World Cup, there's no point. I know there is squad depth and everything, etc. But again, first the topmost priority is about backing the core. Then the next is about the workload management, where they Hmm. get to play games, they have match fitness, but also resting them at proper intervals of time where they're fit and ready to go, and they'll be able to fire come October and there is a home World Cup. So I think India's best chance of winning the World Cup in the an ICC tournament in the last 10 years, I think I had put 2021 as their best chance, but I think with the home World Cup with a 50-over format, I think, and with the top order with Shikhar Dhawan, the duo Shikhar Dhawan and Rohit Sharma back together, and they might slot maybe KL at 5 with Surya Kumar might get his number 4 spot and Kohli at number 3. I think this is going to be India's best chance to win a ICC tournament in the last decade. राइट। I आदित्य, अभी विघ्नेश ने बात की वर्कलोड मैनेजमेंट की, तो अभी रिसेंटली सुनील गावस्कर ने कहा कि जब आईपीएल खेलने की बात आती है तो वर्कलोड मैनेजमेंट ये कहाँ चला जाता है, और जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं इंडिया के लिए आप खेलते हो तो एकदम से ये वर्कलोड मैनेजमेंट निकल कर आता है। तो काफी बोल्ड स्टेटमेंट था। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? See, we have to be honest here. I think जिस तरफ क्रिकेट जा रहा है अभी, it is going to be a franchise cricket. That's very clear. So we cannot, looking at the domination of IPL or even other franchise cricket leagues, I don't think any player would like to miss or will be allowed to miss any of the matches. Yes, just like Vignesh raised the point, at least don't play irrelevant matches during IPL. जैसे suppose a team like Mumbai Indians, if they qualify after playing around 9-10 matches, राइट। teams from the BCCI as well, and the franchise, they have to coordinate better in this case. But I don't think during IPL the workload management will ever come, or even in the other leagues as well. But when it comes to Indian players, it's IPL. I don't think workload management will be questioned again. Will be in question, but again that will not happen. But again, what I feel is, before 2022, this T20 World Cup, India never played with their best 11 in the bilaterals. Yes, we won everything, but we never played with any best 11. Like if you say two teams we faced, Australia and South Africa, two of the best teams, but we never played with the best 11. Someone was in NCA, someone was rested. We were still राइट। experimenting. So I think going into the ODI World Cup, okay, rest your players in internationals, not a problem, but at least a couple of series before the international, or at least the last series before the World Cup, play with your best 11. If anyone gets injured while playing that series, it's hard luck. But then play it, just go through those all scenarios and then back your team. I think that's how राइट। it should be done. राइट। तो अब बढ़ते हैं सोशल ट्रैकर की तरफ और देखते हैं वहां पर हमारे लिए क्या है, क्योंकि उसके बिना हमारा लाइव अधूरा है। तो इट्स रेनिंग इन वेलिंगटन, तो वही बारिश है। हम उम्मीद कर रहे हैं बारिश जल्दी से रुके और एक तगड़ा मैच देखने को मिले, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। तो if you're a wicket keeper and you're doing such type of saves, it's unbelievable। तो संजू सैमसन, सुपर संजू सैमसन आज ही हमें खेलते हुए डेफिनेटली देखेंगे। तो सभी को उम्मीदें हैं, फील्डिंग तो जबरदस्त करेंगे, एक अच्छी इनिंग्स इनसे देखने को मिलेगी। क्रिकेट फैंस, तो देखते हैं अगला जो सोशल ट्रैकर पर हमारे पास क्या है। क्रिकेट फैंस जो हैं वो स्टेडियम के बाहर पहुंच चुके हैं पहले T20 मैच के लिए, और वेट आउटफील्ड की वजह से टॉस अभी डिले है। तो आदित्य, आपको क्या लगता है अभी जो टॉस डिले है, तो मतलब आगे क्या वो ओवर्स कम हो सकते हैं जैसे हमने देखने को मिला था? प्रिपरेशन डन एंड ऑल सेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एक्साइटिंग सीरीज। सभी एक इस बेहतरीन सीरीज को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है, इंडियन फैंस हो, न्यूजीलैंड फैंस हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो विघ्नेश, व्हाट डू यू थिंक, क्या ओवर्स कम हो सकते हैं आज के मैच में, लाइक जिस तरह से अभी बारिश हो रही है? Yeah, I think it's only
minutes. They're close to 19 minutes past the start of the day's play. Again, if it goes over 40-45 minutes, I think it might start. There is so again, after inspection, we might get an official cutoff time, and with respect to that, I think there might be changes in the overs and the राइट। power. तो राइट, उम्मीद कर रहे हैं जल्दी से बारिश खत्म हो और मैच देखने को मिले। तो अभी आज का लाइव यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद है कि जल्दी से टॉस होगा और एक मजेदार मैच देखने को मिलेगा। तो इट्स मी चिराग मनोजा अलॉन्ग विद विघ्नेश एंड आदित्य साइनिंग ऑफ। और आपको क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, आप सीधा सीधा क्रिक ट्रैकर पर आओ, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, फेसबुक पर लाइक करो। सारे अपडेट्स आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले बिना किसी रुकावट के। मिलते हैं आपसे पोस्ट मैच लाइव में।